The specimen paper of we're solving the specimen paper of ICSE semester 2 physics. We'll start with question 1. Question 1 में बोल रहा है choose the correct answer. Pendulum A, B, C and D are tied to a flexible string. PQ and are at rest. Pendulum C is disturbed. ये वाला. Which of the following statement is true? Only pendulum C will start vibrating. Pendulum A, B, C, D will start vibrating, but A and D will vibrate with maximum amplitude. No. Pendulum A, B, D will also start vibrating. Vibration of the pendulum C are forced vibrations. कौन सा? नहीं. Only pendulum C. Okay. पहला चीज C का लेंथ इज मोर. सो अगर हम A को डिस्टर्ब करते हैं तो D मेरा वाइब्रेट करता है विद मैक्स एम्पलीट्यूड. ये थोड़ा कम करता है, ये थोड़ा कम करता है. करेक्ट. So vibrations of pendulum C are forced vibrations. Should be the proper answer. Because अगर C मूव करेगा तो ये दोनों भी मूव करेगा. It cannot happen without an external vibration. Correct. A, B and D will also start vibrating. But D is a better answer. C is not a periodic motion. Pendulum C is not periodic. Is it not? It is external force to A, B and D. Correct. And C will also have the constant time period. Correct. Would you agree with me? A and D का amplitude maximum आपको. The point is, all of this can be the right answer, but you have to choose which one is the best answer. We know that A, B and D will also start vibrating. And which of the following statements is true? तो हो सकता है एक से ज्यादा भी true. Now, what I feel that D should be the better answer because D की वजह C की वजह से बाकी vibrate करेगा, but C is also a good answer. I think I will get back to you on that. Which of the following is not a characteristic of parallel combination of resistors? Not. If one resistor is fused, the circuit does not become open. That is true. Total resistance R is given by the formula. That is true. Not चाहिए हमको. Total resistance become less than the least resistor. That is true. यानी D मेरा answer है. Without reading, you can mark D as your correct answer. Which of the following statement is true? Live wire has zero potential. Fuse is connected in the neutral wire. Potential alive and earth wire is always same. No. Earth wire is used to prevent electric shock. Definitely. A diagram below shows a free conductor AB kept in a magnetic field and is carrying a current from A to B. So current is direction mein hai. To avoid confusion, complete the part of the circuit. Is not shown. The direction of the force experienced is up. Left hand, Fleming's rule. Current, magnetic field, ये होता है. The diagram below shows a magnet moved near a coil along its axis. Which of the following diagram shows the correct flow of current during this motion? So this is moving away.
है ना। सो यानी यहाँ हम लोग को साउथ पोल चाहिए. साउथ पोल इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. साउथ पोल इज क्लॉकवाइज. पहला चीज ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. वुड यू एग्री विथ मी? डायग्राम देखो. लुक्स रॉन्ग. लुक्स रॉन्ग ना. ये दोनों देखो. साउथ पोल चाहिए, ये होगा. जस्ट डू इट ऑन योर फिंगर्स. साउथ पोल, इट विल गो अप. अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ इस साइड में ऊपर जाएगा ना, और पीछे वाले साइड में नीचे जाएगा. तो यहाँ ऊपर दिखा रहा ना, पीछे वाले साइड में नीचे जाएगा. क्लियर? द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज. ये साउथ पोल है. सर्किल लेंगे तो ये ऊपर ये नीचे. अगर हम इसको थोड़ा सा ये कर देंगे, इफ आई जस्ट रोटेट इट, तो ये ऊपर ये नीचे. यहाँ आपको ऊपर कहाँ नजर आ रहा है? पीछे में तो ऊपर नजर आ रहा है ना. इफ यू लुक एट दिस, पीछे की तरफ से ऊपर आ रहा है और यहाँ नीचे आ रहा है. सो ऐसा डायरेक्शन है. दिस इज नॉर्थ पोल. Ice of 200 grams at 0 degree needs dash amount of heat to melt. ठीक है. आंसर रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 से डिवाइड नहीं किया. सॉरी, नॉट दैट वन. क्लियर? The radiation with maximum penetrating power resonance is. ठीक है. Equal to the free vibration of the body. Nuclear radiation which gets deflected toward negatively charged plate in an electric field. नेगेटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिव होगा. अल्फा. कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. ऊपर में 8, नीचे में भी 8 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 ohms. If a cell of 2.4 volts with negligible internal resistance is connected across AB, calculate the current. करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियल डिफरेंस. करंट होता है V बाई आर, 4/24 into 10, 10/6, 5/3, 1.67 amperes. Which will absorb more heat? 10 gram. Just a minute. Yeah. 6/10 होगा. V इज इक्वल टू आई आर होता है. I इज इक्वल टू V बाई आर होगा. 40/24 आएगा. ओ यस, सॉरी, 22.4/4 हो रहा है.
यानी ये हो जाएगा 0.6 amperes. Which will absorb more heat? 10 gram of ice at 0 degree centigrade or 10 gram of water at 0 degree centigrade. Ice. Correct? For the same mass of ice and ice cold water, why does ice produce more cooling than ice cold water? So we have the same reason. Clear? What are the poles at A and B when the key is closed? So यहाँ ऊपर जा रहा है. Something like this. That's the south pole, correct? B में south pole है, A में north pole है. States two ways to increase the strength of the magnetic field in this coil without changing the coil. Increase current or add iron core. बोल दिया ना, नंबर ऑफ कॉइल चेंज नहीं कर सकता है, तो आयरन कोर ऐड कर सकता है. And the next question gives you that answer. If you place a soft iron by the center of a hollow cardboard and replace the DC source by an AC source, then will it attract small iron pins toward itself when the current is flowing through the coil? Yes. फिर से समझिए. सो सी में बोल रहा है कि भाई देखो एक कार्डबोर्ड है, उसमें हम लोग ऐसे करके कॉइल कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन दे आर ट्राइंग टू टेल अस दैट यहां हम एसी की जगह डीसी सोर्स कर दिया. सो डीसी सोर्स ऐसा लिखा जाता है, और डीसी सोर्स में कभी ये नॉर्थ पोल होगा, कभी ये साउथ पोल होगा, करेक्ट है ना. कभी ये साउथ पोल होगा, कभी ये नॉर्थ पोल होगा. तो जब ये नॉर्थ होगा तो ये नीचे वाला साउथ होगा, जब ये साउथ होगा नीचे वाला नॉर्थ होगा. बट क्या है कि ये फ्लक्चुएट करेगा. बट द पॉइंट इज इट विल बी अ मैग्नेट, एंड अ मैग्नेट attracts magnetic substances. मैग्नेट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स एज वेल, बट वो रिपेल भी करता है. तो अगर ऐसे वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ कर रहा है, इन दी एंड इट इज गोइंग टू इजीली अट्रैक्ट आयरन पिन. आयरन पिन तो अट्रैक्ट कर सकता है, ये तो कर सकता है, बिकॉज इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोग उसको सिर्फ अट्रैक्ट होना है. सो यस, इट विल अट्रैक्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ मैग्नेट, एंड नॉर्थ पोल रहे या साउथ पोल रहे या अट्रैक्ट होगा ही. सो यस, ठीक है. बट अगर ये बोलता है यहाँ मैग्नेट है, नॉर्थ पोल उसका फेस कर रहा है, तो अट्रैक्ट होता क्या? कभी अट्रैक्ट होता, कभी
रिपेल होता, so it will not be a definitive answer नहीं दे पाता. I want you to do question 3 and 4 before we complete this. 3 करिए. 3 करते हैं. The diagram below shows a cooling curve for 200 grams of water. The heat is extracted at the rate of 100 joules per second. Answer the following. So, as far as we can make this out, this is time in seconds. Would you agree? Okay. So 640 seconds. Okay. Question 3, part 1. 640 seconds for water to cool down from 80 degrees centigrade to 0 degrees centigrade. Would you agree with me? Just making a statement. It took 640 seconds. Yeah. Therefore, Q1 energy absorbed will be mc theta f. ठीक है. M कितना है 200 grams into C into fall of temperature is 80. Now, how much energy is released by the water? 640 into 100. एक सेकंड में वो 100 जूल्स अब्सॉर्ब कर रहा. टोटल कितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया वो? 640 into 100. Yes or no? So C is equal to 640,000 200 into 80. 40 joules per gram per degree centigrade. Just a minute. There's one more zero now. 640,000. ये 2 जीरो यहाँ से कटा, ये एक यहाँ से यहाँ कटा, तो ये 80 नहीं आएगा, ये 8 आएगा. 8/2 will be 4. That's your answer. Heat released QBC is number of seconds into 100. 1312 in minus 640. 67200 joules. That's your answer. Clear? Clear? है ना? Observe the diagram given below and state whether the bulb will glow when we switch on K. लाइव वायर में कोई स्विच नहीं है, न्यूट्रल वायर में लगाया है. सो यस, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, यस, सर्किट कंप्लीट होगा वो ग्लो करेगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा वो ग्लो नहीं करेगा. ऑब्वियस बात है ना. अनटिल अनलेस तुम उसको पकड़ के सर्किट कंप्लीट कर लेते हो. So if you hold the bulb while it is connected to the live wire, then you provide the current, another pathway to neutral, to earth through your body. So circuit complete हो जाता है. ठीक है. बट जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हो तब तक वो फ्लो नहीं करे. इज इट सेफ टू हैंडल द बल्ब व्हेन स्विच्ड ऑफ? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज लाइव वायर अभी भी कनेक्टेड है, करंट अभी भी है. गिव अ रीजन. As live wire is still connected.
Two metals A and B have specific heat capacities in the ratio 2:3. If they are supplied same amount of heat, then which metal will show greater rise in temperature? कम हीट लगता है, अगर देखो अगर 2:3 है, तो अगर एक को 2 जूल्स लगता है टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम को, दूसरा को 3 जूल लगता है, तो अगर दोनों को 60 जूल्स देंगे तो इसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा. सो विच मेटल? ए. इसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा क्योंकि उसको एनर्जी कम चाहिए. विच मेटल विल हैव ग्रेटर मास इफ द राइज इन टेम्परेचर इज द सेम फॉर बोथ मेटल्स? Which metal will have greater mass if the rise in temperature is same for both metals? Rise in temperature same है. M1 C1 theta 1 is equal to M2 C2 theta 2. Correct? A ले लेते हैं. Correct? Now MA by MB निकालते हैं. याद रखिएगा दोनों का राइज इन टेम्परेचर सेम है, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बी बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3/2 होगा. तो किसका मास ज्यादा है? यू वांटेड टू कैलकुलेट, वो तो आप देख के भी बता सकते हो. जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है उसका मास ज्यादा होगा ना, अगर सेम टेम्परेचर राइज हो रहा है. If the mass ratio of metal A and metal B is 3.3:5, then calculate ratio in which the temperature rise. So MaCa theta A, ये change of temperature है, is equal to MbCb change of temperature B, theta A by theta B is equal to MbCb MaCb. ये हो जाएगा 5/3 और Ca होगा. Cb/Ca हो जाएगा 3/2. ये रेशियो देगा 5:2. ठीक है. ये हो जाएगा 5:2. आर वी क्लियर अबाउट इट? The specific capacity of metal A is 0.26 joules per gram per degree centigrade. Then calculate the specific capacity of metal B. टू बाई थ्री है. 0.26 by CB is equal to 2/3. 0.26 into 3 by 2 is equal to CB 0.13. CB हो जाएगा 0.39 joules per gram per degree centigrade. Are we clear? So if we are going to look at this, vibrations of pendulum C are forced vibrations लिखा है. C का वाइब्रेशन फोर्स नहीं है. C को भी हम लोग छोड़ देते हैं वाइब्रेट करके, यानी व्हेन वी डिस्टर्ब इट वी लीव इट, यानी उसका वाइब्रेशन नेचुरल डैम्प वाइब्रेशन होगा. सो C इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. समझ में आया बात? There has to be a reason why you are choosing C and not D. Clear?
So that's your answer. Okay, we are going to continue what we left off on in the last class. Which one of the following graphs, A or B, shows free vibrations in vacuum? Which one shows free vibrations in a medium? Vacuum में कौन सा होगा? This is vacuum. ठीक है, ग्राफ ए. एंड ये वाला इन अ मीडियम, मीडियम के अंदर में ये होगा. How did you come to this conclusion? Vibrations are not damped. अगर डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है मतलब क्या कि मेरा एनर्जी मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है. साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है? जब आप अपना एनर्जी मीडियम को ट्रांसमिट करते हो, वो आगे ट्रांसमिट करता है, करेक्ट. अदरवाइज साउंड मूव ही नहीं करता अगर अपने एनर्जी आप आगे ट्रांसमिट नहीं करते. सो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है. किस लिए है? बिकॉज इट इज इन अ मीडियम एंड इट इज ट्रांसमिटिंग इट्स एनर्जी टू द मीडियम. फॉर द बॉडी से मीडियम में एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है. स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. When the magnetic flux linked with a coil changes, then an EMF is induced in the coil. The EMF lasts as long as the change in the flux lasts. As long as the change in the flux lasts. Name one electrical device which works on this principle. One electrical device that works on this principle. Electric generator. हम जब जनरेटर को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, इट जनरेट्स एंड एन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक जनरेटर. नंबर 3, a nucleus emits an alpha particle. यानी 2 एटॉमिक नंबर कम होगा, 4 एटॉमिक मास कम होगा. इट विल गिव यू y. एटॉमिक नंबर इसका 80 होगा एंड नंबर मास नंबर 190 होगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 110. मास माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू न्यूट्रॉन्स. राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन शोइंग द एमिशन ऑफ द पार्टिकल. तो हम लोग वो ऑलरेडी लिख चुके हैं. क्लियर? नेम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोन इन द डायग्राम बिलो. फ्यूज, जो बहुत किसी का यहाँ उड़ा हुआ है. Some circuits of yours are not working. You are supposed to do this for homework. Question 5. A, fuse. B, solder. C, high resistance, low melting point. These are the properties of the fuse wire. Fuse wire में resistance high होता है, melting point low होता है. Define pitch. Pitch क्या होता है? The characteristic of sound that allows us to differentiate between a
shrill sound and a bass sound. Clear? Bass मतलब generally low frequency होता है. Right? Two wires A, B, and C, D of the same length are stretched by the same amount. Which wire will produce sound of greater pitch on plucking? Greater pitch मतलब more frequency. More pitch मतलब more frequency. Wire AB has greater pitch. Wire AB has greater pitch. ठीक है? क्यों? Pitch is inversely proportional to the thickness of the wire. Pitch is inversely proportional to the thickness of the wire. Why is water used as a coolant in radiators? Water has highest specific heat capacity. That's your reason. That's it. Name the radioactive isotope used to find the age of fossils. Carbon 14. Name the radioactive radiation which it emits. Alpha, beta. Carbon 14 emits a beta particle to convert into nitrogen. Question 6 बोल रहा है a beam of alpha, beta, and gamma rays is traveling through a certain region in space. Arrange them in ascending order of ionizing power. Ionizing power सबसे कम होता है गामा का, उससे ज्यादा होता है बीटा का, उससे ज्यादा होता है अल्फा का. नंबर 2, सॉरी, ये 1 हो गया ए और ये हो गया बी. Which of the above will pass undeviated if subjected to an electric field? Gamma. Gamma will pass undeviated. इलेक्ट्रिक फील्ड में डालिए या मैग्नेटिक फील्ड में भी डालिएगा तो ये डिविएट नहीं करेगा. सी. With respect to your answer to part B above, what will be the change in the nucleus of an atom if such a ray is emitted? No change except some energy will be released. ऐसे कोई न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सब सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जा रहा है. Number 2, a change in amplitude of a sound wave is noticed. A change in the amplitude of a sound wave is noticed. Which characteristic of sound is affected due to the above change? Loudness. Amplitude is directly related to loudness. How is amplitude related to your part? Loudness is directly proportional to the square of the square of the amplitude, right? Am I right? Very good. What happens to the quality of sound? No change.
Clear? Part 3. An electric bulb is rated 240 volt and 100 watt. What information can you get from the above statement? Power is 100 watt. Operating potential difference is 240 volt. And it should work when the potential difference is 240 volt. When connected to 220 volts, the bulb will use less power. Power कम यूज होता है. C. Resistance is equal to V square by P. 240 into 240 by 100. 576 ohms. Clear? Also find the energy consumed by the bulb in 10 minutes. Work done is equal to power into time. 100 into 10 into 60. 60000 watts. Clear? ये जूल्स होगा, वॉट नहीं होगा, जूल्स होगा.